मैं तो नहीं कहूँगा struggle, but yes, my story is all about pain versus patience, problems versus challenges, and basically what to do, more importantly what not to do in life. There's a very famous saying in English, man proposes and God disposes. Yeah, right. So God had also made big plans for me, जो कि मुझे पता नहीं चला. And in the next 15 to 20 minutes, I will take you through the journey of my life on the same roller coaster, जिस पे कि मुझे लाइफ बिठा के वहाँ से लेके गया. To start off with, all of you will agree with the point that experience helps you beat failure. So today's topic, in which I'm going to talk about to you, is like how not to lose in life. That means I've lost a lot of things in life. That is why I know how not to lose in life. Yeah. So I was born to a normal middle class family, had a very average life, average dreams. My father was a government employee, and my mother has the toughest profession in this world. She was a housewife. Yeah. And I was succeeded by another brother. We had a very decent life till the time in 2003 when I hit the first roadblock of my life. I lost my mother. My mother expired. It was really very tough for me to lose her. At that time, I was just a 15 years old kid. Knew nothing about this world. Very tough time I saw. But then again, that was not the last thing which life had in plans for me. Mummy ke jaane ke baad, I was like emotionally very disturbed. So from starting, I was like an introvert. मुझे बाहर जाना पसंद नहीं था, किसी से मिलना पसंद नहीं था. I used to be myself. मैं अपने अंदर ही खुश था, मैं अपने घर में खुश था. After my mother, घर की दीवारें काटने को दौड़ती थी, to be honest. तो आप घर के अंदर रह ही नहीं सकते, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा. दिमाग काम नहीं करेगा ठीक से, आप किसी से मिलोगे नहीं, किसी से बात नहीं करोगे तो आप ऐसे ही डिप्रेशन में पड़े रहोगे 24 घंटा. टीवी पे क्या चैनल पे कौन सा सीरियल चल रहा है पता नहीं होगा, 2 घंटा टीवी देख रहे होगे. सो दैट इज व्हाट हैपेंड टू मी. सो आई स्टार्टेड मूविंग आउटसाइड. माई पर्सनैलिटी चेंज्ड. I turned into a different human being altogether. Now about the second roadblock I hit. To hit the second roadblock in life, I did the mistake which almost every one of you here must have done. I fell in love. ठीक है? I made a girlfriend. मुझे लगा ऐसे था, वो बचपन वाला वो फील होता है. मुझे लगा ऐसे था कि गॉड अगर एक हाथ से लेता तो दूसरे हाथ से बहुत कुछ दे देता है. But that was only a cake story. There is nothing like that. ठीक है? Life has its own plans. About the roadblock which I was talking to you about, like I broke off. Then I made myself understand कि ठीक है, ये मेरी गलती तो थी नहीं. Okay, everybody has his own reasons. अगर आपको कुछ पसंद है ज़रूरी नहीं कि मुझे पसंद हो, अगर मुझे कुछ पसंद है ज़रूरी नहीं कि उसको पसंद हो. So whatever the reasons were, I tried to fight my depression because I went back to square one again. I tried climbing up in life again. In between that, roadblock 3, I met with an accident in which I shattered my spinal cord. I have a L4 over L5 problem. That means my spine starts from here, goes to a point, and from there it doesn't go like this, it goes like this. It is dislocated, for which I am prescribed not to do a lot of physical activities. So I had to give up one big dream of mine which I had. I wanted to be a national level basketball player. I was playing for the state of Odisha for at least 4 to 5 years. I had to give up my sport. So I cannot play anymore. After losing all these things, I thought यार इससे बुरा क्या हो सकता है, चलो हो गया, जो हो गया हो गया. अब अगर मैं इसको सर्वाइव कर जाऊँ तो फिर आगे तो कुछ और प्रॉब्लम नहीं है. But very recently, life again gave me a run for my peace in life. I lost my father very recently. In between this gap of 10 years, I have lost, including friends, family, my well-wishers, my teachers, almost 13 people with whom I was in connection on a daily basis. The last was my father, and उन्होंने मेरे अपने आखिरी सांसें उन्होंने मेरे ही गोद में ली. Very painful moment it was, and I thought that I will never be able to get up from what has happened to me right now. He was the spearhead for me everywhere. No mother, nobody. छोटा भाई बाहर पढ़ता है. I was the only person staying with him, and he was the sole support of mine.
This is what life gifted me. I should say gifted me. जब आपको कोई कुछ गिफ्ट देता है तो what do? We give a return gift, right? Yes or no? So you know what return gift have I given to life? I am a leading corporate lawyer today, having 131 companies to my bouquet of clients. Above it, I'm a specialized human rights lawyer. I design framework for NGOs through which they fetch funds from abroad and work in remote areas. I'm a corporate trainer. I used to play basketball and whatnot. Whatever I have thought of in my life, I have achieved it. I have mountaineered, I have scuba dived, I have underwater walked, I have bungee jumped, I have skydived. I have not left a single stone unturned in life as of yet within this age. The day when I started losing in life, the very day when I started losing in life, because I had average dreams. I just wanted a 2x2 का घर, एक छोटी सी मारुति की गाड़ी. अगर हॉलीडे पे ज़्यादा भी बहुत कुछ हो गया तो एक बार स्विट्जरलैंड ले गए फैमिली को, वेल एंड गुड, लाइफ इज डन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है. बट लाइफ टुक सच अ टर्न कि all my dreams, all my hopes, all my plannings about life came upside down. I had to pick up all the right things in life because I have a tendency to lose. Okay? So I have to pick up all the right things in life. For an example, if you have a bone problem, you take calcium, right? So if I have this handicap, then I'll have to take care कि फिर ना गिर जाऊं, फिर कुछ बुरा ना हो जाए. So I have to be extra careful, extra focused, सब कुछ extra. मेरे लिए problem ये हो गया, I was head over heels for her because I lost my mother. There was this emotional gap in my life which I could not fill. So I was like, okay, ठीक है, यही life है, मतलब यहीं पे खत्म है life. This is it, full stop. आगे नहीं जाना, जितना हो गया बस थोड़े पैसे कमा लो, settle हो जाओ, like that. When this breakup thing happened to me, I found out that this emotional gap which was there when my mother expired has come back. Don't let your happiness depend upon somebody. I analyze ऐसे तो फिर I mean like अगर ऐसे ही सब लोग मेरी लाइफ में आते रहे and like my happiness is dependent on somebody, तो मेरे लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है. Yes. For an example, this brother sitting here, अगर मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, अभी वो साउंड बढ़ाएगा and I'll start shouting, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, right? So lesson I learned from that is never ever give the remote control of your life in anybody's hand. You are responsible for your happiness, you are responsible for your actions, you are responsible for whatever is happening in your life. Never put it on somebody. अच्छा उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा कर दिया. No. Never give the remote control of your life in anybody's hands. That is one big lesson I learned. उसके बीच में मैंने काफ़ी सारी achievements निकाल ली थी, ठीक है. I was fighting with life. Life was punching once, I was punching twice. Life was punching thrice, I was punching 4 times. मैं ग्रेजुएशन फिनिश किया, उसके बाद आई वेंट फॉर मास्टर्स इन सोशल वर्क MSW, जिसके चलते आज मैं ये सारे NGOs के फ्रेमवर्क्स डिज़ाइन करता हूँ. बिकॉज आई हैड दिस कॉर्नर कि मैं सोसाइटी में कुछ तो करूँगा यार, कुछ तो करूँगा, सबके लिए कुछ तो करूँगा. अरे ऐसे इंसान हैं हम लोग, अपनी फैमिली के लिए करते हैं, बट देर आर पीपल हु रियली नीड योर हेल्प, तो उनके लिए कुछ तो करूँगा. सो दैट्स वाई आई डिड अ मास्टर्स इन सोशल वर्क. तब तक मैंने MBA भी निकाल लिया था, ठीक है. आई डिड माई MBA, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो वो था करियर के लिए, ये था पैशन के लिए, एंड लाइक लाइफ लग रहा था सॉर्टेड आउट है. जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, इट वाज 12 o'clock इन द नाइट. आई मेट विथ अ डिजास्ट्रस एक्सीडेंट. अगर आपने वो कार की फोटोज देखी होती तो यू वुड हैव टोल्ड मी दैट हाउ डिड यू लिव, यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था, भूत होना चाहिए था यहाँ पे. इट वॉज अ डिजास्ट्रस एक्सीडेंट, डिजास्ट्रस एक्सीडेंट हो गया. सो आई वॉज लाइक बेड रिडन, घर में पड़ा रहा. आई कुड नॉट गेट अप, आई कुड नॉट गो टू वर्क. जो भी मैं कर रहा था उस टाइम, जो भी, सब कुछ एक स्टैंड स्टिल पे आ गया. एवरीथिंग स्टॉप्ड सडनली. पैसे आने बंद हो गए. लाइफ केम टू स्टैंड स्टिल. यू नो, बोन डिसलोकेशंस दे टेक टाइम, यस और नो, टू हील. तब मुझे एक बात समझ आई. आई कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन who still by God's grace is a very good friend of mine. I called him up, I said यार ऐसा मेरा काम रुक गया, तू मेरे थोड़ा काम संभाल लेगा. He was exactly able to do that. ठीक है. जिस दिन मेरा वो फ्रेंड अवेलेबल नहीं था, किसी और फ्रेंड को बुलाऊंगा, लेकिन वो जाके वो काम नहीं कर पाएगा. मैं बोलूंगा वही करना, वही करना, वही करना, ही हो जाएगा. बट ही वॉज नॉट एबल टू डू इट, वेयर दिस पर्सन वॉज एबल टू डू इट. I learned a very big lesson there as well in life. That is, find your tribe, keep them close.
which means you need to find out who are the like-minded people, who are the talented people who can do this in the stream in which you are working. For an example, you are a doctor, you need to find out 5 definitely good doctors जो कि आपके absence में आपका काम संभाल पाएं, right? If you are an engineer, you need to know 10 engineers जो कि आपके absence में आपका काम संभाल पाएं. So from there, I understood life is never a one-man journey. You need support. You definitely need support, and that too good support, right? So that was one thing from where I started team building. Accident से उठा, सब कुछ ठीक हो गया. फिर this recent tragedy where I lost my father, ठीक है? This was something very big. This was like beyond my capabilities, जिसको मैं मतलब संभालना थोड़ा मुश्किल था. What happened is 23rd July 2003, my mother expired. 23rd July 2018, my father expired. उनके दिमाग में ये चीज़ सेट था कि इस डेट पे तेरी मम्मी गई थी, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे दिख रही है, वैसे वो मुझे बुला रही है, सो आई विल बी पासिंग ऑफ ऑन दिस डेट ओनली. तो एक काम करना, वो ज़मीन वमीन के पेपर्स वहाँ पे हैं, घर के पेपर्स वहाँ पे हैं, इस अकाउंट में इतना पैसा है, तो सब निकाल लेना. उसमें मैंने तेरे को नॉमिनी डाला है, इसमें मेरे छोटे भाई को नॉमिनी डाला है. ऐसा करना वैसा करना, मेरे जाने के बाद ऐसे ऐसे रहना वैसे रहना. मतलब आप क्यों ये सब बोल रहे हो? काम डाउन, ठीक है? आप पहले ठीक हो जाओ, यू टेक योर मेडिकेशन, आप पहले ठीक हो जाओ, फिर हम बात करेंगे. और यू नो दिस जो बेचैनी एक होती है ना कि अच्छा कुछ हो ना जाए, तो मैं 1000 लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ उस टाइम, पापा के टाइम पे, कि यार कुछ हो रहा है यार, कैसे क्या करूँ. मैं लाइक पापा ऐसे मेरे को बोल रहे हैं. कोई मेरे को बोला एक हनुमान चालीसा ला, उसको ला के पापा के तकिया के नीचे रख दे, अगर मम्मी आएगी ना पापा को लेके नहीं जा पाएगी. आई इवन डिड दैट. जो भी छोटे से छोटा आइडिया, जो भी छोटे से छोटा एक होप दिखाने लगा, ये मेडिसिन चेंज कर दे, वो मेडिसिन चेंज कर दे, पापा विल बी ऑलराइट. आई डिड दैट. जिसने मेरे को जो बोला, आई डिड एवरीथिंग, बट आई कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम starting his heavenly journey. Big thing which happened to me. Right now, I don't have a father, I don't have a mother, anybody. I am the oldest son in the family, and I handle the rest 61 members joint family में. I do that. पापा चल बसे. Then 2 दिन बाद मैं जाके उनका अलमारी खोल के, you know, I was taking out his stuff, उनका pension book, उनका जो भी documents है, उनका आधार कार्ड and all that. I was trying to filter कि अच्छा क्या क्या रखना है और क्या क्या डिस्पोज करना है. To my explanation, I found such a thing which again hit my mind very hard, very hard. What I used to do is like, for an example, I'm earning money. तो मेरे पैसे तो salary based तो है नहीं. आज 10,000 तो कल 5,000 तो कभी 50,000 तो you don't have a salary based life in law or business. So for an example, when I used to get a good money, for an example 1 lakh, मैं लाके पापा को दूंगा, पापा एक काम करो, आप ये लाख रुपए रख लो, जस्ट टू शो हिम दैट ओके योर सन इज अ बिग गाय नाउ एंड ही इज अर्निंग. ठीक है, आप खुश रहो. एंड वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई विल कम, पापा एक काम करना, 10,000 रुपये देना, आई नीड टू गो टू मेफेयर विद फ्रेंड्स. सो ही विल से कितना पैसा खर्चा करता है, ऐसा करता है वैसा करता है, बट ही विल गिव मी 10,000. सो व्हाट आई हैव इन माई माइंड इज लाइक, अच्छा मैंने आज पापा को 90,000 दिया एंड 10,000 मैंने लिया और मैंने खर्चा किया जो भी. आई used to do this practice to make him happy, and I would have done it almost 50 to 100 times. ठीक है. Now after he went away, we had a joint account. पापा का मेरा एक joint account था जहाँ पे हम लोग वो पैसे डालते थे. अब जब मैंने वो joint account के statements निकाले, जिस दिन मैंने जितना पैसा दिया है, 1 लाख, 50,000, 30,000, जिस दिन मैंने जितना पैसा दिया है, उस next day को उतना ही पैसा account में deposit हुआ. That means he was giving me all that money from his small pension to spend, but he was saving my money. So he was the biggest asset in my life which I lost. ठीक है, no loss can be bigger than this. Even if I lose myself, no loss can be bigger than this. With a lot of difficulties, I came out of it. I had this habit of multitasking. Things went fine. But lesson learned. Keep your assets, or which you consider the biggest asset in your life, very close to you. आज मैं खुद सोचता हूँ कि he was such a big asset for me. Had it been so, I would have deviated some more time to him. Maybe, I don't know. Maybe there's a chance कि शायद कुछ दिन और उनको मैं जिंदा रख पाता. That was one big loss in my life. A part of it, this was about my personal life, which has made me the person I am. And yes, few instances in my professional life which also changed me as a person, because
तब तक मेरा ये हो चुका था कि नहीं भैया सीखना तो है, मार्केट में एवरी डे सीखना है, एवरी मोमेंट सीखना है, यू कांट स्टॉप लर्निंग नो मैटर हाउ बिग यू आर, whoever you are, you can't stop learning. I thought of taking such a career into my hands which has power, which has good amount of income, and where I can utilize my potential, you know, my learning and whatever abilities I had. So I thought of doing law because till the time high court यहाँ पे है, मेरे जॉब का कोई ट्रांसफर नहीं है, हाई कोर्ट है, मैं हूँ, yes or no, so there is no transfer in my job. That made my father happy and that's why I am the person I am today. I am a lawyer. लॉ किया, कोर्ट ज्वाइन किया, कोर्ट जाके देखता हूँ भाई साहब यहाँ पे तो रैट रेस मचा हुआ है, रैट रेस। कुछ लोग खड़े हैं वहाँ पे क्या चाहिए, एफिडेविट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसी चाहिए, वैसे चाहिए, चलिए चलिए इधर चलिए उधर चलिए, सब लोग एक दूसरे को खींच रहे हैं। मैं सोचा कहाँ प्रोफेशन में आ गया यार, टाई पहनने वाला बंदा, इसी में मतलब बैठने वाला बंदा, ऑफिस में बढ़िया से एकदम काम करने वाला बंदा, फाइल मेंटेन करने वाला बंदा, आ कहाँ गया मैं, क्या करूँगा यहाँ पे आके। कपल ऑफ थिंग्स विच आई एक्सपीरियंस्ड इन my legal career and due to which maybe I owe a lot of my success to that is beautiful instances happen to you when you have an independent profession. I trust me when I say this, beautiful instances happen to you if you're open to the world. An incident happened, I was outside my chamber, there was this guy, very poor guy, wearing एक छोटा सा t-shirt and like 3/4 half pant, पूरा मैले कपड़े, ठीक है, और एक एकदम फटा हुआ चप्पल टाइप से पहन के आया मेरे पास, बोलता है सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया एंड थोड़ा हेल्प कर देंगे। आई सेड या डेफिनेटली आई हेल्प यू, व्हाट हैपेंड। तो मेरा भाई है, ऐसे एक छोटा सा गलती से उसको एक केस में उसको फंसा दिया, आप कैसे भी करके उसको निकाल दो। आई सेड फंसा दिया मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा केस उसने मेरे को बताया विच वॉज लाइक ए वेरी वेरी नॉमिनल थिंग एंड हिज ब्रदर वॉज इनसाइड द प्रिजन। सो आई थॉट कि ठीक है आई विल बेल यू आउट। बोलता है सर बहुत गरीब हूँ और पैसे नहीं है, ऐसा है वैसे है, लेकिन जितना भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ I will give you, and he paid me some 200-300 or 500 rupees, anything, some amount below 500. I said, I don't even want this money, ठीक है, I don't even want this money, मैं वैसे ही कर दूंगा तो चिंता मत कर। नहीं सर आप रखिए 200-300 जो भी, ठीक है। And I bailed that person out. केस में जो कॉम्प्लिकेशन था, अगर उसको एक्चुअली खर्चे के हिसाब से देखा जाए, या तो एक नॉर्मल लॉयर के फीस के हिसाब से देखा जाए, इवन इफ अ न्यू लॉयर वुड चार्ज नॉट लेस देन 30,000 टू बेल हिम आउट, आई डिड इन 300-400। चल ठीक है यार, आई हेल्प समबडी। 2 days or 3 days later, I am sitting in a state-of-the-art restaurant. That same person who was in poor clothes in front of me, begging कि sir पैसे नहीं है, help कर दो, bail कर दो, was sitting in front of me, having 3 gold chains, 10 rings, and driving a Creta around. Life में ये film हो गया। I said, अरे sir कैसे sir, how are you? And he was holding an Apple iPhone. I realized life is not how it looks to us. It is not like that, not at all like that. Basically, you must have felt till, I mean like in my speech, I'm speaking about people only, all people management skills. That is what I've learned in life. पागल हो गया मैं उस दिन. I made it a point. No. Step back, calculate, हिसाब कर, आगे बढ़. ठीक है, I lost on multiple occasions like this. मैंने कितने लोगों को ऐसा हेल्प किया होगा, बेल किया होगा, ये किया होगा. Anyways, but yes, you know, the law of karma, it says what goes around comes around, right? Whatever you sow you bow, thou you reap. जैसा करोगे वैसा भरोगे. हाँ. So similarly, a situation 1 year back, I went to a local police station here. I will not name it, and I had some work with the inspector. So I spoke to him regarding a case, and everything was like, my meeting was done. So I had a cup of tea and I was like moving out, and there was this person on whom 2 more police wale were like shouting like hell, and he was like, sir please, yeah, but he was dressed up well. He looked like as if he's a gentleman. I don't know his financial abilities, but he was a gentleman. So I just एक वो होता ना हेल्प करने का कीड़ा जो कभी मरता नहीं है. So I just ठीक है क्या हुआ. There was this friend of mine who said, यार मुफ्त के मैटर्स में दिमाग मत डाल, लेट्स मूव अहेड. 9 बज गया रात का, बहुत टाइम है, चल मैं नहीं ठीक है थोड़ा देखते हैं क्या हुआ है, उसको इतना चिल्ला रहे हैं यार, वो बंदा रो रहा है. मैं क्या हुआ, नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, 420 का केस लग गया, वैसा है. एंड देयर इज दिस नॉन ओडिया गाय, ठीक है, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम. सर आई एम द कंप्लेनेंट, मैंने ऐसे कंप्लेन किया, उसने मेरे से ये ले लिया वो ले लिया और पूरा बिजनेस मेरा खराब कर दिया एंड ऑल दैट. आई सेड ठीक है, बट आई सेड ठीक है, मैं हैव अ लुक एट द एफआईआर. अब जब वो देखा कि मैं इंटरफियर कर रहा हूँ, वो पूरा ऐसे ही मतलब सर कैसे भी करो यार प्लीज़ मेरे को बचा लो,
आज बचा लो सर, मैं आपके बड़े काम आऊँगा. एंड दैट वाज हिज रियल, आई स्वेयर दैट वाज हिज रियल एटीट्यूड विच ही शोड मी. ठीक है, सर ठीक है, चल एफआईआर दिखाओ. एफआईआर में सारे जो भी सेक्शंस थे ऑल वे अवेलेबल, कुछ बड़ा चीज़ था नहीं. आई सेड 41 नोटिस देके छोड़ दो. पुलिस वाला, अरे सर आप तो फिर इंटरफियर कर दिया ऐसा, जो भी है प्रोविजन है आप छोड़ सकते हो. बेल अगर आप उसको फॉरवर्ड ही करते, आई मीन लाइक देयर इज अ प्रोविजन, या इफ ऑल द सेक्शंस अवेलेबल, पुलिस थाने से आपको बेल मिल सकता है. सर छोड़ दो. एंड उसने उसको छोड़ दिया. बंदा निकल गया, रोते रोते वहाँ से बाहर आया. मैं बाहर खड़ा हूँ, एक छोटी सी चाय की टपरी है, वहाँ पे चाय पी रहा हूँ. आया, एक लाइन मुझे बोल के गया था कि सर यू डोंट नो हु आई एम. आप आए, अपनी लाइफ का 15 मिनट मेरे को दिया यहाँ पे, मेरे लिए आर्ग्यूमेंट किया और मेरे को यहाँ से निकाल के लेके गए. मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपके वहाँ पे चाय का पैसा दे पाऊँ, बट आप याद रखिएगा मैं ऐसे टाइम पे आपके काम आऊँगा, आप मेरे को ज़िंदगी भर भूलना मत. मैंने कहा ठीक है, ऐसे रोज़ सुनता हूँ. ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू, गो होम. I went off. He took my contact number, he added me on Facebook and he was like in contact with me. Till date. You won't believe, I am saying the truth, you won't believe, my father expired. I was in heavy depression. All my funds were blocked. Huge responsibility of family on my head. I am planning my income कि मेरे को ये केस लेना है, मेरे को ये केस नहीं लेना, मेरे को ये जॉब करना है, मेरे को वो नहीं करना. एंड आई एम लाइक वेरी कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट, हाउ टू मीट ऑल दीज थिंग्स इन लाइफ. दैट पर्सन केम टू मी, ही न्यू इट फ्रॉम सोशल मीडिया दैट ठीक है आई हैव लॉस्ट माई फादर. ही यूज्ड टू कॉल मी, बीच बीच में कॉल करता था. दैट पर्सन केम टू मी, took me to his office. I saw his office. I was astonished. He has an office in Bhubaneswar near Ram Mandir. He is making a turnover of almost 2 to 3 crores. अभी जो चल रहा है. And the projection he has 20 to 30 crores will be done in 3 years. उसने मुझे उस कंपनी में 25% का स्टेक होल्डर बनाया without even me asking him for a help. Straight away I said, why are you doing this? क्यों दे रहा है भाई? आई एम अ लॉयर राइट. मेरा मेन स्ट्रीम काम अलग है, बाकी जो मैं करता हूँ वो करता हूँ, क्यों कर रहा है? ही सेड आई एम डूइंग दिस जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट. दिस इज वेयर आई लर्न दैट कर्मा, वट एवर यू डू, योर एक्शन फ्लोट्स इन द यूनिवर्स एंड वन डे इट विल कम बैक टू यू, गुड और बैड, वट एवर. माई करियर टुक ऑफ. आई हैव अ travel company to my name where I am a 50% shareholder. I have a software company to my name where I am a 30% stockholder. I have this company, this corporate company, which deals in almost 5 segments of business, including export, and I am a 25% stakeholder in that. So this is how things have been, and a very interesting thing, which I would like to share with you is there a friend of mine who always tells me a story. I think you all should know about this story. चलो, happiness, peace, everything is in position. ठीक है, लाइफ में स्ट्रगल, जीतना हारना, everything is position. Life is going on. One prime factor which kept me standing, which kept me at the place where I am today and which is taking me ahead. One prime factor. And I believe you must know it. There's a very famous story of two friends. ठीक है, they went to the jungle. They went backpacking, they had their gear, their tent, and they went to the jungle. They were climbing mountains, and at a point they opened the bags to put up a tent. Just a story, What happened is when they were putting up the tent, there was this tiger who saw them and started walking towards them. Big tiger, man-eater, okay, started walking towards them. Now the tiger is walking, one friend is like shell-shocked. Okay, क्या करना, अब तो मर गए भाई, शेर खा जाएगा, क्या करना है, मतलब कैसे जीऊँ, क्या करूँ, सामने पेड़ भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, कहाँ कूदूँ, क्या करूँ. एंड अनदर फ्रेंड इज लाइक वेरी 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 रिलैक्स्ड एंड लाइक वो अपना बैग खोला और अपने रिबॉक के शूज़ निकाल के पहन रहा है. ठीक है, दिस फ्रेंड आस्क्स दैट फ्रेंड, आर यू मैड, व्हाट आर यू डूइंग डूड, इट्स अ टाइगर, तू रिबॉक क्या, तू गाड़ी चला ले, वो तेरे को काटेगा ही पक्का, तू कुछ नहीं कर सकता. यू नो व्हाट वाज द रिप्लाई फ्रॉम द अदर फ्रेंड, ही सेड, डूड, I don't need to outrun the tiger. I just need to outrun you. शेर जिसको पहले पकड़ेगा उसको खाएगा. अगर मैं तुझसे ज़्यादा तेज भागूं, हो गया भाई, बच गया मैं. ठीक है, it's a very important story. Be market ready. Be competitive. Every time be on your toes. No matter whatever is happening in your personal life. No matter how much pain is there in your personal life. Nobody will see it.
till the time you're competitive. Once you're done with the competition, नहीं यार मेरी लाइफ में तो ऐसा हो गया, बैठ गए, 4 जो नए स्किल्स आ रहे हैं मार्केट में वो आपने नहीं सीखे, and you're out of the competition, life is over. Life is really damn over. मैंने इतनी सारी अचीवमेंट्स की, बहुत कम टाइम में भगवान की दया से जहाँ पे भी मैं आज पहुँचा हूँ. इसके बीच में एक और अचीवमेंट है जो कि आपको करना है कि नहीं करना सोच लीजिएगा. Now what I did in the craze of my achievement, शादी हुआ, घर आई, I immediately got her admitted into law, ठीक है, because I was doing good as a lawyer, right? So मैंने उसको law पढ़ाया. Now the law is over, now she is a lawyer. अच्छा, moral of the story, if you are a lawyer, don't make your wife a lawyer, otherwise the bedroom becomes a courtroom. Thank you all. So this was my life journey, and I especially thank Winners Voice for inviting me, and I had a very good time with you people speaking. So I tried not to give you a lot of business lessons, which we always do, which can be done anytime in life. This was just a talk, heart to heart, and I guess that is the theme of Winner's Voice. Probably from my words, if you have got any clue how not to lose in life, I'll be honored. Thank you.